Hello everyone, very warm welcome to all of you to your favorite channel, that is Unacademy Unstoppables, and you are watching this on the largest online education portal of India. Yes, that is Unacademy. So with the slogan "Let's crack it," we will proceed in our today's hot topic of the day, that is the burning topic of the day as well. And the scene here, what we can see on our screens is Mr. S Jaishankar, Honorable S Jaishankar, sir. We call him as External Affairs Minister, and he is here inside the headlines because of this one single statement what we have got, that is, he has stated on Sunday, that is just a day back, that India's relations with Canada is going through the most difficult phase as of now, where we can see that New Delhi, that is India, has stopped, literally you can see here what we have done, that we have stopped issuing visas to whom, to the Canadian citizens for now, right? That means we are not allowing the Canadians to enter inside the territory of India, as it was not safe for diplomats to go for issuing such visas. And we know it very well. Why Canada and why this particular statement by the Honorable External Affairs Minister of India? That is the only reason because Canada and the Canadian administration, they are favoring some anti-Indian campaigns. And why are they doing so? They are literally not able to understand that because of their such anti-Indian activity support, they will do nothing but they will put some axle on their legs as well. Only and only thing that will be happening here, Canada will be ousted with regard to the term of the geopolitics if they do not understand. Because if it happens that India calls all of their Indian citizens residing inside the state of Canada, and considering this, Canada will see itself inside a state of a backlash with regard to its economy and everything. As majority of the Canadian residents there, they are not Canadian, to be very honest, they are Indian. And because of this thing, Canada must understand that you are not in state of going ahead with any kind of an anti-India support thing, anti-India campaign support thing. सो अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बता दिया है कि देखो कनाडा, देखो जस्टिन ट्रूडो, प्लीज ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ही नुकसान उठेगा. So what we can see here, the statement that came from the External Affairs Minister, that Canada's action, they are absolutely violating what? They are absolutely violating the Geneva or the Vienna Convention, right? So Vienna Convention का violation है, not Geneva Convention, sorry. Okay, Vienna Convention का violation है. क्या है क्या नहीं है उस पर हमने बातचीत करनी है. So let's see what we have got in here. So Canada's inability to provide safety and security to Indian diplomats, challenging the most fundamental aspect of the Vienna Convention on diplomatic relations. External Affairs Minister S Jaishankar said that remarks at an event here came 2 days after the Canada withdrew 41 of its diplomats from India and paused the walk-in services as it at its consulates in Mumbai, Bangalore, Chandigarh, affecting Canadian visas facilities for Indians. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसका वॉयलेशन हो रहा है. यहाँ पे वॉयलेशन है एब्सोल्युटली दी वियना कन्वेंशन. ठीक, अब ये जो वियना कन्वेंशन की आप बात कर रहे हो, जो बताता है कि जो डिप्लोमैट्स हैं, ओके, एक कंट्री में काम कर रहे डिप्लोमैट्स जो कि दूसरे किसी कंट्री के हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी. एंड व्हाट वी कैन सी हियर, कनाडा ने अभी हाल ही में 41 अपने डिप्लोमैट्स इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए जो है विड्रॉ कर लिए कि हम तुम्हें अपने यहाँ हम अपने डिप्लोमैट्स को वहां पर सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रहे. मींस हाउ सिली यू कैन बी कैनेडा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने कन्वेंशन साइन कर रखा है. So what our External Affairs Minister has to say, what we can see here, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. आप जेनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे एक टाइम पीरियड पे, और अब आप बात कर रहे हैं वियना कन्वेंशन की, और आप दोनों को वायलेट कर रहे हैं. इसी जस्टिन ट्रूडो की हम बात करें, इसी कनाडा की हम बात करें, तो अब से कुछ दिनों पहले तक ये ऑफ द ओपिनियन थे
कि हमें दुनिया भर में जिनेवा कन्वेंशन इंप्लीमेंट करना चाहिए, और उस जिनेवा कन्वेंशन के इंप्लीमेंटेशन के आंसर में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा तुम जिनेवा तो छोड़ो, तुम वियना कन्वेंशन को तो मेरे भाई पूरी तरीके से फॉलो कर लो, right? Here you must follow the whole of the Vienna Convention first. Okay, fine, but we must also go ahead with the consideration of the Geneva Convention. तो हमने ये दोनों की तरफ से बात करी है. अगर आप इसके आगे की कहानी देखो तो what he has to say. So my hope, my expectation is that the situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats, because ensuring safety and security of diplomats is once again what the very fundamental aspect of the Vienna Convention. तो अब आपको पता है Vienna Convention किसके ऊपर है. Vienna Convention सिर्फ और सिर्फ हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, उस होस्ट कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट होता है कि भाई ऐसा है कि हमारे डिप्लोमेट्स आपकी कंट्री में हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, और आपके डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में हैं तो उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी. Okay, so this is what final the statement has come, and what we can see here, Canada's action that breaches the Vienna Convention, what we can see that, and right now that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. So if we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas, he added while giving a speech on Kautilya Economic Conclave. Right? So this is what simple statement is कि आपने वीजाज रोक दिए, हमने वीजाज रोक दिए, जाओ, नुकसान किसे होगा? नुकसान इधर ही होगा. ठीक है, यहाँ ये जो आप कंट्री देख रहे हैं कनाडा, राइट, इनकी ही पोजीशन जो है डगमगाएगी, बिकॉज कितना भी ये इंटरनेशनल सपोर्ट मांग ले ऐसे मामले में, बिकॉज दे आर supporting what? They are simply, the Canadian administration doesn't understand कि ये सिंपल शब्दों में टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी भी एंटी कंट्री एक्टिविटी को ये प्रमोट कर रहा है. अब कल की डेट में आप उठ खड़े हो गए कि मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं हमस को सपोर्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली कोई यूके कोई यूएस आपके सपोर्ट में नहीं आएगा. बट इतनी छोटी सी बात काश जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा को सपोर्ट में समझ में आ जाती. सो व्हाट वी कैन सी हियर, एंड इन्फॉर्म्ड सोर्सेस हियर, दिस थिंग हियर, and informed sources told the Hindu that India was reviewing the security situation that led to the suspension of visa services. मतलब हम रिव्यू जरूर कर रहे हैं क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि इस तरीके की जबरदस्ती की आपस में टेंशन बनी रहे, लेकिन हम क्या चाहते हैं और सामने वाला क्या चाहता है, इस वक्त ये दोनों बातें अलग अलग है. और बार बार देखिएगा यहाँ पर बात आएगी वियना कन्वेंशन की. तो वियना कन्वेंशन तो हमने डिस्कस करना ही करना, ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि क्या है वियना कन्वेंशन. लेकिन वियना कन्वेंशन के साथ साथ अब एक और चीज पर हमें नजर डालनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द जेनेवा कन्वेंशन. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस जेनेवा कन्वेंशन हियर, बिकॉज सम टाइम बैक मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, he stated, yeah, not only Justin Trudeau, many of the people, they were stating that Vienna Convention follow करना है तो हमें Geneva Convention भी follow करके चलना चाहिए, war नहीं होनी चाहिए, आपस में tension नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से चीजें बनी रहनी चाहिए. So he was talking about something that is Geneva, and right now we are talking about Vienna Convention that is in the year 1961. Okay, so ध्यान रखिएगा Vienna Convention कब साइन हुआ है? 1961, whereas Geneva Convention will be followed after much of the time of 1961. Okay, so here we have got the Geneva Convention, right? So firstly, let's discuss on the facts of Geneva Convention, and here we have got whom? We got Mr. Justin Trudeau. और मिस्टर ट्रूडो जो है अभी क्या है, वियना कन्वेंशन की बात सुन के दिमाग में आ जाओगा, सो आई शुड वायलेट द जेनेवा कन्वेंशन एज वेल, समथिंग व्हिच इज नॉट सो गुड, राइट? सो एक तरफ वियना, दूसरी तरफ जेनेवा, और उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और इंडिया इनको एक ही जवाब देगा कि जस्टिन, रियली डू यू थिंक आई विल लेट यू डू दैट? नो, एब्सोल्युटली नॉट. अगर आप इस फिराक में बैठे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है. I will not let you do that, right? Okay, so proceeding ahead, but before that, we have got to discuss that what is the importance of an academy in my life when I'm trying, when I'm planning, when I have decided that I want to be
the bureaucrat. I want to qualify and see myself as an IAS, IPS officer. So you know it very well what is the importance of an academy in your life. That one out of every three selection is from us. That is UPSC CSE 2022, right? So rank 12, rank 9, rank 4, rank 10 and 13, they are all from us, that is from Unacademy. Why? Because they have opted for Unacademy Plus. और अभी आपके लिए एक सबसे बेहतरीन चीज है, जो रिपीटर्स बैच है हमारा, जिस 31 अक्टूबर से जो है सेकंड स्लॉट इसका एक्टिव हो रहा है, यानी कि सेकंड बैच हमारा जो रिपीटर्स बैच का जो है वो 31 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है। गाइस ध्यान रखिएगा, व्हाट वी हैव गॉट live classes by top educators, fresh test series, updated self study PDF and the quiz, and PT 730, यानी कि लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स आपके पास होंगे। तो कोई भी डाउट है अगर, तो ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर, आपकी सपोर्ट टीम यहाँ पर मौजूद है। प्लीज डू कॉल देम ऑन 85858585 and 85, and you can clear all of your doubts here with regard to your Unacademy Plus subscription. So guys, please remember, if you are preparing from Hindi medium, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो लक्ष्य बैच आपके लिए शुरू हो रहा है। ये कब से शुरू हो रहा है? 31 अक्टूबर से ये भी शुरू हो रहा है हमारा, ठीक। सो ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बैच हो चाहे रिपीटर्स बैच हो, आपको हमेशा एक प्रोमो कोड की जरूरत पड़ेगी। और मैंने हमेशा प्रोमो कोड डिस्कस करते टाइम, शेयर करते टाइम अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यारे भाइयों बहनों को यही बताया कि ध्यान रखना कि आईएएस बनना है तो आईएएस टर्म का इस्तेमाल भी हर जगह करना है, ठीक। और खास तौर पे इसका इस्तेमाल तो आपको करना है जब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सो यूज द प्रोमो कोड PMIAS अपना जो है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। इस प्रोमो कोड की खासियत क्या है, चलो इसमें आईएएस तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ इस प्रोमो कोड के इस्तेमाल करने से आपको आपके अनअकैडमी प्लस पे 10% की एक्सेस, आपको जो है डिस्काउंट एक्सेस छूट मिल जाना है। Right everyone, so please remember Lakshya Batch 2024 PMIAS, आपको जो है प्रोमो कोड लगाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हिंदी मीडियम लक्ष्य बैच, इंग्लिश मीडियम रिपीटर्स बैच एंड द फाउंडेशन बैच इज देयर, राइट। सो 20 अक्टूबर से हमारा ये जो है फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में चालू हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कंप्लीट प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज है हमारे पास, unlimited access to batches, comprehensive study material, 1:1 mentorship, pre and mains test series, and 333 plus toppers from the very foundation batch in UPSC CSE 2022, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, मृणाल पटेल सर फॉर इकोनॉमी, प्रतीक नायक सर फॉर हिस्ट्री, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर फॉर पॉलिटी, सुदर्शन गुर्जर सर फॉर ज्योग्राफी, आतिश माथुर सर फॉर IR and internal security, and we have got last but not the least Madhukar Kotwe sir for CSAT, राइट एवरीवन। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे है, ठीक, आप इस पर तुरंत कॉल करें, कोई भी इश्यू है आपको पता है ये सब सॉल्व करेंगे आपका इश्यू। और प्रोमो कोड यहाँ पर आप लिख कर रखो, प्रोमो कोड आपके लिए क्या है, इकलौता प्रोमो कोड है आपका, ध्यान रखना, PMIAS, राइट एवरीवन। सो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट जेनेवा कन्वेंशन। सो 1949 क्या है जेनेवा कन्वेंशन की दास्तान, और क्यों ये न्यूज में है? दो न्यूज में टेक्निकली है तो वियना कन्वेंशन, बट वियना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है जेनेवा, जो कि दोनों को इंटरलिंक किया गया है। सो 1949 जेनेवा कन्वेंशन एंड द एडिशनल प्रोटोकॉल्स, दे आर इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लिमिटिंग द बारबैरिटी ऑफ द वॉर। जंग रोकने की बात करता है। So they protect the people who do not take part in the fighting. That is, they are the civilians, the medic staff, the doctors, the aid workers, and so on. And those who can no longer fight, that means वो soldiers जो जख्मी हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, या prisoners of war हैं, उनकी भी protection की भी बात करता है हमारा Geneva Convention 1949, ठीक। So the first Geneva Convention protects wounded and sick soldiers on land during the war. The second one protects the wounded, sick, and shipwrecked personnel at sea. The first one for the land, that is zameen. दूसरा वाला जो है वो पानी, that is sea. And the third one, that is to the prisoners of war specifically. And the fourth one affords protection to civilians including in occupied territory, यानी कि वो जो कि वॉर जोन एरिया में जो है फंसे हुए हैं। द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर, या रशिया और यूक्रेन के अंदर वो लोग जो जंग की वजह से फंसे हुए हैं। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन उनके लिए है, थर्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए है, सेकंड वो सोल्जर जो लड़ते लड़ते जो है जख्मी हो गए हैं समुद्र में, और पहला वो सोल्जर्स जो लड़ते लड़ते जख्मी हो गए जमीन पर।
Okay, so Article 3 की अगर हम बात करें Geneva Convention की, so it is common to the 4 Geneva Conventions. जितने भी convention हैं उनमें Article 3 जो है convention का लागू होता है, which covers situation of non-international armed conflicts, that is civilian internal armed conflict split over into the other states, or internal conflicts in which a third state or a multi-force intervenes alongside the government. कि external affairs की हम बात कर रहे हैं, external protection की हम बात कर रहे हैं. So the two protocols of Geneva Convention, that is of 1977 and 1949, they are here written on your screens. So they were adopted in 1977, to strengthen the protection of victims of international and non-international armed conflicts and place limits on the wars that are fought. तो यानी कि सिंपल शब्दों में जो जेनेवा कन्वेंशन है 1949 का, जिसका दूसरा प्रोटोकॉल 1977 में भी आ जाता है, जो सिंपली कहता है कि कहीं कुछ भी हो रहा हो, जंग भले ही दो लोगों के बीच में हो रही हो, लेकिन इससे किसी का भी तीसरे इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो मेडिक सपोर्ट स्टाफ है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो जख्मी सोल्जर्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. तो आज आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, ध्यान रखिएगा दोनों ही फैक्टर्स को. ओके, एक तरफ आपने पढ़ा है वियना कन्वेंशन, ओके, जो कि है विथ रिगार्ड टू द treaty, okay, that was signed in the year 1961, that is for the safety and protection of the diplomats working in the foreign countries. And the another one, that is what is in our screens, that is the Geneva Convention, that is for the prisoners of war, civilians, and other support staff, those who are stuck in the war zone. Okay, guys, so thank you so much for joining me in here. I hope you loved the session, and if you did, then please do not forget to like the session. Or अगर कोई भी feedback है, so please do share with us on the comment section, in the comment section. Okay, guys, so see you all soon in the very next one. Till then, bye bye, take care, study well, and yes,